Are you feeling like someone might be compromised your PC? First, let's run Microsoft built-in malware scanner. Uh, Press Window plus R and open Run. And here you type MRT and just enter. And you can see this is welcome to Microsoft Window Malicious सॉफ्टवेयर रिमूवल टूल। इसकी वजह से आप किसी भी आप सिस्टम को स्कैन कर सकते हैं। देन क्लिक नेक्स्ट। यहाँ आप देख सकते हैं 3 टाइप ऑफ ऑप्शन है जिसमें आपको क्विक स्कैन है। इस मोस्टली लाइक टू कंटेन मेलिशियस सॉफ्टवेयर इन द सम एरिया लाइक सिस्टम मोस्ट लाइकली एरिया। एंड सेकंड इज फुल स्कैन, आपको पूरे इंटायर सिस्टम को स्कैन करेगा। देन देयर इज कस्टमाइज स्कैनिंग, इसमें आप पर्टिकुलर सब फोल्डर एंड डायरेक्टरीज को आप स्कैन कर सकते हैं। यहाँ हम क्विक टू स्कैन को क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं हमारा स्कैनिंग स्टार्ट हो चुका है। जैसे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ स्कैनिंग कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हमारे पीसी में किसी प्रकार कोई भी malicious एक्टिविटी नहीं मिला है। इफ़ अगर सम इस malicious एक्टिविटी यहाँ पर फाइंड आउट होता है तो यहाँ पर हमें शो होता। नेक्स्ट, लेट्स मेक श्योर no suspicious account has been added to your PC. Press Window plus R and type netplwiz and enter. This window shows all user account on your system. Check 2 things. If you see might unknown account, that's a red flag. Look at the option user must enter a username and password to use this computer. If this is unchecked, someone may be enable automatic login and enable if it's needed. To find hidden program that run automatically, open Task Manager by pressing Ctrl+Shift+E and go to the Startup Apps. Then here you see that app launch every time the window boots. If you see unknown software that enable like this, just right click and select disable. Hacker often to add malicious app here to run silently in the background. Some common suspicious sign: unknown application name, no publisher list, recently installed app you don't remember. Still in Task Manager, switch the Process tab. Sort by CPU, memory and network usage. If you see a program using a too much CPU or network and you don't recognize it, it could be malware. Search the program name on Google and confirm it's safe. It looks suspicious, right click, open file location and then run full antivirus scan on that folder. Last step, open Windows Security and confirm 2 things. First, check your antivirus is on, and second, check your firewall is also on. If any of these are turned off without your knowledge, it's big warning sign. If you found anything strange, disconnect your PC from internet immediately. Run a full antivirus scan and change your password from safe device and check your email for unusual login activity. And that's how to check if your PC is hacked in just a few minutes. If you want to more simple cybersecurity tutorial, hit like, subscribe and comment your next topic.